तो वॉरेन बफे की सारी चीजें इन्वेस्टमेंट से लेके हम अगर देखते हैं रिस्क टेकिंग के ऊपर भी उसके कमेंट्स हैं। दूसरी एक और चीज अगर हम वैल्यू वॉरेन बफे की वेल्थ की देखते हैं वो ओवर टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, बिकॉज वॉरेन बफे मेजरली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस और प्राइस चेंजेस की वजह से इन इन रिच लोगों की वेल्थ के अंदर भी हम प्राइस वो अमाउंट यूएसडी में डिफरेंट देखते रहते हैं. So I'll begin with saving, investing, inflation, and all related concepts today. Uh, so savings is income not spent or deferred consumption. Basically, when you have income, there is a certain portion you take it out. Either you take it out earlier or you wait, and after the expenses, you keep that money aside. Although a good way is to keep that money out beforehand. So या आप अपनी कंजम्पशन को डेफर करें. तो यहाँ आ जाती हैं आपकी नीड्स एंड वांट्स. दे आर नीड्स एंड देन दे आर वांट्स एंड वी कैन इजीली डेफर द कंजम्पशन ऑफ द वांट्स. There are various methods of saving. That is, when you want to put aside money, you can do so in a bank account. You can put it in cash या cash equivalents में. आप उन्हें पिगी बैंक में डाल सकते हैं, आप अपने घर पे रख सकते हैं, आप उसको किसी भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में स्टोर कर सकते हैं. बट दैट इज सेविंग. Saving does not mean that you've invested that money. Savings are part of the income that we haven't spent. Some people look at it as income minus expense equals to saving, whereas, as I said, we should look at income minus saving equals to expense. What do you do invest? How do you invest? What do you do with your saving? If you keep your saving aside, money is losing value. Unless you invest that money, investing is actually putting your money to work for a certain time period or placing it in a project जो कि आपके लिए positive returns generate करे. It is the act of allocating your resources, usually of course money. Most of the time investing is money. With the expectation of generating income, profit, or gains. You can invest in your own business also. You can invest in real estate. You can invest in getting gold. You can invest in. So there are various asset classes जिनको कहते हैं जहां आप invest करके अपने सबसे पहले तो saving की वैल्यू लॉस को बचाना होता है एंड देन सेकंड स्टेप इज टू गेट द पॉजिटिव रिटर्न. सो सबसे पहले ऑन अ डेली बेसिस आवर मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू. सो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला पर्पस तो होता है कि उस मनी की वैल्यू लॉस को स्टॉप किया जाए. We all have life goals. We want to buy a house, we want to buy a car, we want to upgrade our car, we want to educate ourselves or our children. We want to have a peaceful retirement life, which is very important. Usually Pakistan, where people forget about retirement, they get really busy with their children, family, and their well-being and buying the house and buying the car. So we have medical and other forms of emergencies. We need, at times we don't have work and there's a break in our regular work routine. And that is when you're unemployed and you need some sustenance at that time. Or you want to prepare for a wedding. Wedding could be a destination wedding as well. So ये सारे हमारी reasons हैं, life goals हैं, जिनके लिए हमें investment की ज़रूरत है. And you save money, you invest that money, you achieve your life goals. Now, when I was talking about money losing value, उसमें सबसे major part है inflation का. Inflation क्या है? हम सुनते रहते हैं महंगाई. एक जमाने में we used to get a Coke bottle for 10 rupees, even less. From our elderly family members, they also tell us कि जी हम तो इतने आनों में खरीदते थे, 6 आनों में और 8 आनों में and whatever, but our generation has not seen that kind of money. इतने small units में हम हजारों में बात करते हैं, and that is because of inflation. Inflation is actually the way the value or the speed at which the value of your money is going down, is your money is losing its worth.
and things are getting more and more expensive. For example, if inflation rate is 7%, then a pack of crisps that costs 100 in a given year, next year uski कीमत 107 हो जाएगी. And honestly, I mean, if we actually look at today, the inflation rate in Pakistan today is much higher than, in fact, ये तो 2017 के हम numbers की बात कर रहे थे, 2019 के numbers थे 11-12%. Today it's 28-29% inflation. Yani every 100 rupees that you save or is losing its value by 29 rupees in a year's time. So you have only 71 rupees left in a year's time. Agar 29% inflation hai, and which is happening. So this is just a way to explain to you how inflation is impacting the value of our money. So if in 2011 you had 100,000 rupees and you could buy X amount of things in that 100,000 rupees, today in 2020 it was equal to 34,000. And in 2031, agar inflation hamari 10% bhi rehti hai, although I'm sure itni kam nahi hoegi iski speed, but even assuming ke 10% hoti hai 21 ke baad se 2030 tak, 31 tak inflation, so that 100,000 which we had in 2011 is actually will be equal to 12,000 only. That is the worth of that money. And how it impacts your buying power is depicted in this graph, that if you could buy whatever basket of goods you could buy with 100,000, if you were running your kitchen expenses with only 100,000 and 2010, 2020 में वही kitchen expenses को meet करने के लिए you need around 260,000. And again, if you say that inflation would be running at 10%, तो 2030 में उसकी जरूरत आपको 6,72,000 की होगी to actually buy that same basket of goods. और ये मैं आपको conservative बता रही हूँ, 2,60,000 अगर आप 2020 में खर्च करते थे तो आपको 2030 में 6,72,000 की जरूरत होगी. ये बहुत conservative है, 10% inflation assume करके लिया गया है. If inflation is higher than that, it can go much higher, 7-8 lakhs तक भी जा सकता. And the challenging part is that our income is not growing at that rate. Our income on an average is growing at 10 to 12% or sometimes 15%. But on a 10-year scale, it doesn't really go that high. So we really need an alternative source of investment or income or revenue coming in to actually support our expenses. एक थोड़ा सा interest rate cycle. It's very important कि हम समझें कि interest rates क्या है. आज अगर मैं देखूं तो interest rate 22% है, whereas inflation is 29%. Interest rate जो है जो State Bank alternate months में, every 2 months में State Bank एक announcement आती है monetary policy की, जिसमें interest rate announce किया जाता है. Right now the interest rate is about 22%. उसके ऊपर अमाउंट लगा के बैंक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे आपकी लोन्स पे या बोरोइंग्स पे एक प्राइस देते हैं K प्लस करके. So K is the KIBOR. There is interest rate. इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस करके बैंक्स एक रेट निकालते हैं 22-23%, जो कि होता है कराची इंटरबैंक रेट, which is the rate that banks follow when they are giving you a loan or taking deposits from you. जब डिपॉजिट्स वो लेते हैं तो वो आपको माइनस करके देते हैं. जब वो आपको लोन देते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए लोन हो चाहे गाड़ी के लिए लोन हो, वो K प्लस करके दे रहे होते हैं. So K is on an average, it keeps fluctuating on a month to month, कुछ 22.3, 24, 23.6 to 23 इस तरह करके वो change होता रहता है depending on how they see the interest rates going. If they're expecting an increase, a further increase, तो वो higher end पे होता है, और if they're looking at a decrease, तो वो थोड़ा सा low होता है. But that is the indicative rate जिसकी basis पे आपको प्रॉफिट भी दिया जाता है आपके डिपॉजिट्स पे या लॉन्ग टर्म लॉकअप डिपॉजिट्स पे.
और ये बेंचमार्क इंडेक्स होता है काइबोर्ड, जिसपे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी आपको जब प्रॉफिट देती हैं तो उसी इंडेक्स को देखकर is used as a benchmark index. High interest rates are good because people spend less, they save more. So there's that propensity to save because लोग फिर consumer loans नहीं लेते, credit cards उस तरह नहीं use करते, home loans नहीं इतना use करते, but that also hampers economic activity because economic activity interest rates high होने की वजह से businesses loans नहीं ले रहे होते बैंक से, but then there's a inflation को control करने के लिए at times interest rates को increase किया जाता है. Many again lowering the policy interest rate would stimulate consumption and investment. Consumption बढ़ेगी अगर interest rates drop होंगे, investments भी बढ़ेंगी, लेकिन लोग जब consumptions की तरफ जाते हैं तो then of course saving नहीं करते. Low interest rates might also prompt people to increase their saving to compensate for low return. Yes, there is a possibility for doing that. But low interest rates are important for businesses to thrive. It is very important कि interest rates low हो ताकि businesses अपने expansions में जाएं. So it's always a catch-22 situation. This is just a graph to show to you कि interest rates किस तरह up and down होते हैं. तो आपको जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इट इज आइडियल कि आप लॉन्ग टर्म लॉक इन कर लें ताकि आपको एक बेहतर रेट मिल सके फॉर अ लॉन्गर टर्म. तो आज अगर आप इवन कहीं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में जाते हैं या आप DSCs भी ले रहे होते हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय एट अ हायर रेट. ग्राफ देखें तो 10% था इंटरेस्ट रेट इन 91, वहां से ऊपर जाते हुए 17% तक गया बाय 93 एंड देन 96 में वो 20% पे था. उसके बाद इट हैज बीन लो. हाईएस्ट गया था 2009 में 15%. दिस इज 9 and 10 के दौरान 15, 14, 15 पीक करके then it came down. During COVID, if you see, there was again a drop 6-7% पे 19-20 में, but right after COVID 2021 में it has it increased a bit 13% पे, and then during 20 and 21 it was as low as 7%. Thereon, because of our situation, because of excessive consumption-based spending, because of economic situation, the interest rate has been constantly increasing since 2021 onwards. और अब 22% पे है at the end of 23. For the last 2-3 months, State Bank ने 22 पे ही hold रखा है. We're hoping कि next couple of months में ये नीचे आए because obviously there is a need for interest rate drops. एक और interesting chart है जिसमें अगर आप देखें तो interest rates का link inflation के साथ किस तरह रहा है. Every time inflation has gone up, उसको control करने के लिए interest rates को भी increase किया जाता है. So you see how the green bar is the interest rate and how the inflation. But since 2020 onwards, अगर आप देखें तो inflation is overtaking the interest rates. यानी इंक्रीज होने के बावजूद इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं कर पाए हैं इंटरेस्ट रेट्स, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. सो देयर आर थिंग्स दैट आर क्वाइट चैलेंजिंग एट दिस सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन 2020 तक तो इट वाज प्रीटी मच अंडर कंट्रोल एंड बट एक सर्टेन पॉइंट पे इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड एंड ओवरटुक इंटरेस्ट रेट्स. तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन डेफिनेटली है गवर्नमेंट के लिए भी और ऑब्वियसली फॉर इंडिविजुअल्स आल्सो. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ऑब्वियसली मैंने टच बेस किया पिछली वाली स्लाइड में सेविंग एंड इन्वेस्टिंग को किस तरह क्यों जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें. ऑफ कोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज आई एक्सप्लेन, मीटिंग आवर फाइनेंशियल गोल्स एंड चूजिंग. अच्छा, ये जो लास्ट स्टेप है से इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से, यू नीड टू चूज व्हिच securities to invest in. There is equity, there is debt. Debt में आ जाता है आपके
term finance certificates, sukuks, government bills, bonds, treasury bills यानी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट bonds होते हैं, और derivatives. Investments, it's a key to your financial planning. You have to maintain a substantial standard of living, and you need to have planned expenses. अच्छा, ये एक concepts को touch करना जरूरी है at this point, because only if you understand how compounding works will you actually start looking and will believe in longer term investment. कंपाउंडिंग जो है एक होता है कि जी आपकी एक एसेट क्लास है, एसेट की अर्निंग्स हैं, उसमें आपको कैपिटल गेन्स मिले या प्रॉफिट आए, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम. When you reinvest it and not take it out and use that money, you will reinvest it, and over time it gives you the multiplier effect. Initial principal plus accumulated earnings over a larger period of time will give you a better multiplier. तो इसकी एक दो demonstrations भी हैं, वो हम दिखाएंगे. अगर आप फॉर्मूला है, बट there's a simple interest यानी profit, कि जी आपने लाख रुपए डाले, उस पे आपको 30% मिला, तो that is 30,000. या 10 years के लिए आपने डाला simple interest पे, वो 3 लाख हो गए. बट जब आप कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो आप प्रिंसिपल के साथ प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करते हैं, और दैट प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लीड्स टू कंपाउंडिंग, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी अर्न कर रहा होता है जब आप उसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं. This is a demonstration which will actually, if you do it and do it by pen also, calculator के साथ आपको नजर आएगा कि ये on a month किस तरह होता है. This demonstration shows two people, and this will actually give you the impact of compounding, कितना effective होता है compounding का impact. If somebody, let's say Amir, started at the age of 19 years and उसने 50,000 डाले हैं, कोई 8 साल तक उसने 50,000 रुपए डाले हैं, which is around अगर उसने 8 साल तक डाले तो 4 लाख है. तो पहले साल उसने 50,000 डाले, at the end of the year प्रॉफिट के साथ 5,000 उसका प्रॉफिट हुआ at the rate of 10%. At the end of this 1 year, इसके पैसों की वैल्यू हो गई 55,000. So next year इसने 50 और ऐड किए, और इससे ये 5,000 जो प्रॉफिट किए थे उसने नहीं निकाले. So at the end of next year उसका जो 105,000 था, 55,000 plus 50,000, 1,05,000 became 1,15,000. So next year he actually earned about 10,000. Furthermore, उसने another 50,000 डाला है on 1,15,000, and it became 1,82,000 at the conclusion of the year. So उसने religiously और proper तरीके से, disciplined तरीके से 50,000 हमेशा हर साल में add किए हैं beginning में, और जो पिछले साल का profit है वो भी add on कर दिया. तो यहाँ तक तो आपने देखा 6,28,000 पे उसने अपनी 26वीं साल को क्लोज किया है. From 19 to 26 he has been investing. So 8 years ने क्लोज किया 50,000 additional डाल के. उसके बाद उसने उसी प्रॉफिट रेट के ऊपर 10% every year earn किया, और कुछ और ऐड नहीं किया. And he left his money to grow. He kept monitoring to ensure कि 10% per annum उसको मिल रहा हो minimum. So अगर आप देखें at his retirement, that means at the age of 65, he has about 2.5 million, 25.8 million he is earned. That is the impact of compounding, because all these years he was not adding more money but letting his balance multiply. Whereas the other gentleman, Mr. Asif, started late. He started at 27 years of age when he started adding 50,000 every year up till 65 years, which is equivalent to about 38 years. For 38 years, he added 50,000 in every year into his account, and he also got the same amount of profit, that is 10%. So
technically Mr. Asif put in 19 million, and at the end of 65 years, he has about 22 million. So his money did not get the time to compound as much as the first one, because he is behind by, let's say, I think 9 or 10 years behind this gentleman. So इसको अगर आप in on paper भी pen और calculator use करके year wise भी करके देखें तो you'll see, but over the years the important part to see is, it's important to understand and understand and see this, is that even if you start early, even if you don't put in, he's put in 8 installments only, या 8 payments की हैं उसने, जबकि दूसरे ने 19 payments की हैं. So there's a difference of there's a huge amount of difference, but time has made, because he left that money, he let it multiply, his money has grown substantially. ये इसको power of compounding भी कहते हैं. Then there's another, so the earlier your children start to save, the more the more time they get to keep their money invested, the better you get a return at the end of a certain tenure. दूसरा एक और concept है rule of 72. Now rule of 72 is very interesting because इसमें आप अपना profit percentage for the year देख के अपना doubling period निकाल सकते हैं कि जी आपकी basic investment कितने time में double होगी. So any doubling amount, doubling of time आपको उस वक्त मिलता है जब आप 72 को अपने interest rate या profit rate से divide करते हैं. यानी 72 को अगर आपको 25% profit मिल रहा है तो 72 को आपने divide किया 25 से, तो 2.8 या 3 साल में आपकी investment double हो सकती है. अगर आपका प्रॉफिट 15% है तो 72 को आपने डिवाइड किया 15 से, तो आपको 4.8 का नंबर मिला है. यानी 4.8 इयर्स में आपकी प्रॉफिट आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल होगा. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट हाउ रूल ऑफ 72 भी कहते हैं इसको. दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द टाइम वेयर योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन एक्चुअली बिकम डबल. आप इसको टारगेटेड भी लेके चल सकते हैं कि जी अच्छा हमें क्या टारगेट करना चाहिए टू मेक श्योर दैट आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल्स इन दैट ड्यूरेशन. एक और कॉन्सेप्ट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का. बिफोर आई मीन आई विल ट्राई एंड क्विकली रन थ्रू दिस ताकि हमारे पास फिर Q&A के लिए और पोर्टफोलियो के लिए कुछ टाइम होए. रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इज दैट आपने एक कंसिस्टेंसी के साथ एक ही एसेट क्लास में उतने ही अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रूबी कॉस्ट एवरेजिंग lies in averaging out the cost at which investor buys units of a particular asset. इसकी मैं next slide में demonstration भी दिखा दूंगी. The fundamental principle of investing reinforces that investors buy low and sell high. It means that one should buy more units when the market is down and fewer units when the market is up. तो अगर किसी शेयर की वैल्यू या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है तो आप 100 रुपए में 5 यूनिट्स ले सकते हैं. बट अगर वो 25 हो सकती है तो आप 100 रुपए में 4 यूनिट्स लेंगे. So if you are keeping the amount consistent and you are buying over the same duration, so if you make it every month, you make it every 6 months, every week, whatever, but the duration should also be the same. By adopting rupee cost averaging, the factor of volatility is reduced. Generally, price changes होते हैं, volatility होती है, उसको आप manage करते हैं through rupee cost averaging. So just this is a demonstration. So if you on the 1st of January, if you invest 5,000 and you buy कोई भी mutual funds ले लें या stocks ले लें, तो शेयर प्राइस लेट्स से 38 थी या नेट एसेट वैल्यू 38 है, आपको 131 यूनिट्स मिल जाएंगे व्हेन यू इन्वेस्ट 5,000. व्हेन द प्राइस गोज lower at 31 you get 161 units. So another 5,000 a third month the price has gone further lower, 29 पे गई अगर. Now these are all assumptions, okay?
But this is to demonstrate the rupee cost averaging. 5,029 पे 172 यूनिट्स मिल गए, एंड देन 26 पे 192 यूनिट्स मिले. सो अगर हम देखें एवरेज शेयर प्राइस 30 रही है over 6 months. Average amount that you've invested over 6 months is 30,000, and average number of units, total number of units that you bought are 986. So if you actually now you look at it, आपकी जो high price है 38 और 31 और 32 different times में, और जो lowest price है वो यहाँ average out हो गई number of units को टोटल अमाउंट से डिवाइड करके, टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके. सो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में बेहतर होती है. सो इट्स 30.83. I hope it's very clear to all of you. I'll move towards the Q&A session. Q&A question में आप जरूर अपने questions छोड़ें या comments दें, so we know what you have understood and what you haven't. एक दो चीजें, एक और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है रिस्क. रिस्क हम सुनते हैं, रिस्क किस किस्म के हैं? देयर इज मार्केट रिस्क, देयर इज इन्फ्लेशन रिस्क, देयर इज लिक्विडिटी रिस्क. कई मरतबा होता है हम अपने सारे पैसे लेते हैं, एक जो भी हमारे पास लिक्विड अमाउंट होता है, हमने जाके एक प्लॉट ले लिया उससे. अब नाउ व्हेन वी नीड सम, आपने 1 करोड़ का एक प्लॉट ले लिया फॉर एग्जांपल, और आपको 5 लाख की जरूरत है, तो आपको पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा अगर आपके पास डिफरेंट और एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. यानी अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, वहां उन एसेट क्लासेस में देयर इज कंपैरेटिवली हायर लिक्विडिटी. प्लॉट में लिक्विडिटी कम है बिकॉज इट्स वन होल ब्लॉक. आप उसको पीसेस में नहीं बेच सकते. अगर आपको 5 लाख की या 10 लाख की जरूरत है, आपको वो पूरे करोड़ रुपए का प्लॉट सेल आउट करना होता है. सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, यू कीप लिक्विडिटी एज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर. इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए आपके पास पोर्टफोलियो में लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, लोअर रिस्क एसेट्स होने चाहिए, और सो इट्स ऑलवेज सपोज्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन. अगेन इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन इज हाई, तो ऑब्वियसली जो आप आज अगर आप बैंक में जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, आपको 20-21% का रिटर्न भी मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन 29% है. सो व्हाटएवर मनी यू आर एक्चुअली प्रॉफिट यू आर मेकिंग, इट हैज अ नेगेटिव रिटर्न, बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगर देखें तो आप -22 से 20 से 9%, 29 में 9% का नेगेटिव है रिटर्न आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न में देखा जाए. So it's always important कि जो भी आप करें इन्वेस्टमेंट, उसमें आप अपसाइड भी जरूर देखें, कुछ ऐसे एसेट क्लास जरूर रखें which can give you a better return and try and beat the inflation. एक और होता है मार्केट रिस्क, जहाँ इक्विटी ऑब्वियसली स्टॉक्स में अप एंड डाउन होता है, वॉलेटिलिटी, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, बट जब लो जाते हैं 6 और 7% पे, तो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस की तरफ, आप बैंक डिपॉजिट्स और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है. तो यू लुक एट अदर ऑप्शंस, which could be anything, which could be stocks, which could be real estate, which could be gold, which could be currency. So it really depends on how you look at currency. में भी risk है. At times currency बहुत high जा रही होती है, volatility high होती है, but at times when you need to sell, तो it may not be as high. So it's always good to think of keep that in perspective. Currency risk, commodity risk, commodity prices go very high. So when you're investing in commodities like gold, and you're looking at silver, or you're looking at oil as an investment or a hedge, you must keep the commodity risk also in perspective. कुछ steps हैं on managing money and saving and investing. So सबसे पहले to control your money, whatever income you're getting, you need to really budget it, your needs, wants, your spending habits, and you need to do a very strong expense tracking, which is not very easy. It needs a lot of discipline because we go out, we eat out, and we spend a lot of money. We buy things which may not be necessary, but well, we buy because we want to buy.
You need to always build a contingency fund. Emergencies and unforeseen circumstances के लिए आपके पास liquid saving investment जरूरी है. You need to look at smart banking. हम generally banking कर रहे होते हैं, but we don't realize कि एक check की क्या value है. हर transaction पे हमारे points हमारे पैसे कटते हैं. मैंने कई मरतबा देखा है बैंक के पास लोग जो है डेली इंटरेस्ट रेट वाले अकाउंट खोल देते हैं या बिजनेस अकाउंट खोल देते हैं, मगर उसमें उनको रियलाइज नहीं होता कि इस अकाउंट में ऑल्दो चेकबुक फ्री है या ट्रांजैक्शंस पे अमाउंट पे फी हाई नहीं है, बट एक मिनिमम डिपॉजिट रखने की रिक्वायरमेंट है. So it's always very important. Maybe you don't want to maintain a minimum deposit if you're a salaried person. तो आपकी obviously साल के महीने के आखिर में towards the end आपका minimum deposit गिरेगा, minimum balance गिरेगा. So at that point आपको it is very important कि आप banking और products कौन सा account आपके लिए सही है, whether you're actually a salaried person, आप online transactions देख के करें, where you can manage and spend less and actually pay less charges. उसी तरह क्रेडिट को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना सीखें. लोग हम 3, 4, 5 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, हमें ये अंदाजा नहीं होता काफी क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स मिलते हैं जिसपे एनुअल फी वेव हो जाती है. कुछ ऐसे कार्ड हैं जिन पे कन्वर्जन में आपको हिट ज्यादा चार्जेस होते हैं. करेंसी कन्वर्जन रेट्स कुछ बैंक्स अच्छे देते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे, कुछ कम दे रहे होते हैं. सो यू हैव टू लुक एट दैट. लोन्स ले रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल होम लोन लेते हैं या कार्ड लोन लेते हैं, उसमें बलून पेमेंट का ऑप्शन है नहीं है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज साल में कभी कभार हमारे पास एक कोई लिक्विडिटी आती है बोनस की सूरत में या प्रॉफिट ऑन एनी इन्वेस्टमेंट. तो वी शुड ऑलवेज लुक एट हाउ वी कैन पे ऑफ debt. So debt, when used appropriately, is a powerful tool. It is extremely powerful tool. Then different credit products को समझना जरूरी है, and we need to look at ways to pay down our debt. Keep it low, especially in a high interest rate environment. Because हमें इस वक्त काफी लोगों को पता नहीं कि credit को revolve करने में 40-45% आपको hit लग रही होती है. On an average per month आपको 3-4% आप interest दे रहे हैं जब आप credit cards use करते हैं. And then look at basic investment. You have to keep it simple. Basics of investment, risks, diversification, profitable investment portfolio. Investment portfolio is very important. Always have a budget sheet like this where you put in your total income, your savings goal, buy a house, savings goal 2, savings goal 3, different किस्म के saving goals होते हैं आपके. आपने उसकी अंदर कितना हर महीने डाला. एक्सपेंसेस में आपके होम के एक्सपेंसेस क्या है, यूटिलिटीज के क्या है, डेली लिविंग के क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. डू कीप ऑल दीज एंड सी वेयर ऑल यू कैन. वंस यू पुट ऑल दिस, रिक्रिएशन, हॉलीडेज, ड्यूज, सब्सक्रिप्शंस, हमारे इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस होते हैं, डिफरेंट और मैगजीन सब्सक्रिप्शंस होते हैं. वी नीड टू पुट दोज इन पर्सपेक्टिव. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमारे होते हैं एंड मिसलेनियस पेमेंट जो बीच में हम दर्जी के और कपड़ों के और dry cleaning, all that has to be listed out, and we see where all we can. Once we have this picture on a month-on-month basis, we will be able to actually control ourselves. So this is very important, budgeting. In short, this is, I would say, be smart, be wealthy. Before I close this, I will take you through a quick run through of what you call the portfolio. जो stock market का portfolio का एक app है, application, जो I want all of you to definitely not miss out. I will just take a look at that. वो कहाँ है? मैंने खोल के रखी थी. Yeah, data portal. For helping, so women who are interested to go into stocks, it's always advisable कि आप smart तरीके से जाएं, directly jump ना करें into stocks. This is only for because आप लोग का इतना interest था into equities, so I thought we should take you through this. ये हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल है, जो आप हमारी corporate website पे जब जाते हैं तो आपको
यहाँ पे डेटा पोर्टल नजर आता है, ये psx.com.pk है, इस पे आप डेटा पोर्टल पे जाएं और वहां आप अपना माई पोर्टफोलियो में अकाउंट क्रिएट करें. व्हेन यू एक्चुअली लुकिंग एट माई पोर्टफोलियो अकाउंट, यहाँ आपने आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, नाम डालना है, CNI ईमेल एड्रेस डालना है बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ एंड क्रिएट अकाउंट करके आप 3 पोर्टफोलियोज बना सकते हैं. सो लेट्स से इस वक्त मेरे पास 3 पोर्टफोलियोज हैं. एक पोर्टफोलियो है ब्लू चिप कंपनीज का, 2022 में बना है और एक 2023 में बनाया मैंने. So portfolio 2020 blue chip companies का portfolio, for example, I will just add in this all the companies that I feel are blue chip companies जो डिविडेंड देती हैं. स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए तो डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं, कैपिटल गेन देने वाली कंपनीज और सही स्टॉक्स हैं या डे ट्रेडेड स्टॉक्स हैं. तो when we look at KSE 100 या KSE 30, उसमें से हम ब्लू चिप कंपनीज के हमने पोर्टफोलियो बना दिया. अब आपने यहाँ अपने आप को पैसे देने होते हैं. मैं अभी क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ बना हुआ है, मैं यहाँ अपने आप को पैसे दे सकती हूँ, पैसे इंक्रीज कर सकती हूँ और मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन बना सकती हूँ. सो लेट्स से आई जस्ट इंक्रीज सम मनी हियर, so I can update that portfolio and then I can go back to my portfolio. How do you make a trade? आपने ट्रेड करनी है, बाय करने हैं, बाय सेल, इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं. आपने कौन से स्टॉक लेना है? फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं एंग्रो ले लेता हूँ. एंग्रो आपने नाम टाइप किया बिकॉज हमें सिंबल्स नहीं हर एक को याद होते. तो नीचे एंग्रो के सारे सिंबल्स आ गए. आपने डिसाइड किया जी मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर्स लेना है. तो यहाँ आपको इसका सिंबल आ गया ईफर्ट. ट्रेड डेट आज की डेट आ गई 500. इसका मिनिमम नॉर्मल स्टॉक साइज है, परचेज साइज है, ये इसका लॉट साइज कहते हैं. जब भी आप स्टॉक्स में आते हैं खरीदने के लिए तो एक लॉट साइज स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आप कोई और खरीदना चाहते हैं तो दैट्स आल्सो अप टू यू. आपने 500 नहीं लेने, आपने 800 लेने. और यहाँ पे आज की नीचे देखिए शेयर प्राइस आ रही है. आज की क्या शेयर प्राइस है? 108.8 रुपीज. आपके कैश बैलेंस से ये अमाउंट निकल जाएगा. आपकी ये ब्रोकरेज फी शेयर पर प्राइस आपको हिट होगी. आपने परचेज कर ली. कॉस्ट ये 87,000 है, ब्रोकरेज फी 128 रुपीज और टोटल आपका 87,168 हो जाएगा. आपने सबमिट किया. अच्छा जी, यू डू नॉट हैव इनफ कैश सो लेट मी कम डाउन. बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया. होपफुली आई हैव कैश हियर. यस. सो मैंने 100 ले लिए. अब मेरी पोर्टफोलियो की क्या कॉम्पोजिशन है? यहाँ आपको सारे कॉम्पोजिशन नजर आ जाएगी. मेरा आज का रिटर्न नेगेटिव है. टोटल रिटर्न ये मैंने पिछले टाइमों में लिए हुए थे. पॉजिटिव 92% बेनिफिट है. मार्केट वैल्यू मेरे जो इस वक्त होल्डिंग है उसकी क्या, और कैश मेरे पास 20,000 रह गया. अब मैं ये देखती हूँ कि मेरा इस वक्त पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है. ओवर टाइम मैंने डिफरेंट चीजें ली हैं. HBL ETF लिया था, ILP लिया था, ईफर्ट आज लिया है, ACI ETF हबको लिया. ये डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स लिए हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आप परचेज कर सकते हैं. इन सब की ऊपर मुझे क्या क्या प्राइस थी मैंने जब लिया, आज की क्या प्राइस है, करंट वैल्यू ऑफ माय होल्डिंग यानी 500 स्टॉक्स और आज की प्राइस की क्या वैल्यू है, रिटर्न मेरा क्या हुआ है, गेन और लॉस कितना है और मेरे टोटल पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर शेयर की क्या होल्डिंग है. So this is all dummy, this is all virtual money, real shares, real symbols, actual commission, actual market price. So ये एक वे है कि आप अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल you had your father or your mother or your husband or anybody in your family, या आपने कोई पिछले साल कभी 2 साल पहले कोई स्टॉक्स खरीदे, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अपना रियल पोर्टफोलियो इसके ऊपर मैप करने हैं. सो फॉर एग्जांपल आपने लकी कोर LCI लिया था, आज नहीं, आपने कुछ बहुत पहले लिया था, आपने 2000
2017 में लिया था, दिसंबर की 6 तारीख को, तो यहाँ आपको फौरन नजर आ जाएगा कि दिसंबर की 6 तारीख पे 789 वाज द शेयर प्राइस इन बैक इन 2017। उस वक्त आपने कितने का लिया था, आप उसको बाय करके अपना पूरा पुराना पोर्टफोलियो भी मैप कर सकते हैं, और यहाँ आप एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना, जो एक्चुअल रियल का डुप्लीकेट हुए वर्चुअल वर्ल्ड में। तो उससे फायदा ये होता है कि आप देख सकेंगे कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपने क्या उस वक्त से आज तक आप जहां खड़े हैं कौन कौन से स्टॉक्स में क्या प्रॉफिट किया, किस में कितना परसेंटेज इंक्रीज मिला आपको, और किस में आपने लॉस किया फॉर दैट मैटर, और टोटल आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ अगर आप देखें तो आपको नजर आ जाती है। ब्रेकडाउन बाय इक्विटीज, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नजर आ गई। सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि 35 सेक्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जब उन सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ब्लू वाला ये ETF का है, ये आपका पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होगा, तो आपको ये सारी इन वन ग्लांस नजर आ जाती है, और आपके अपने पोर्टफोलियो का अप एंड डाउन भी नजर आता है जो आपने वर्चुअल उसमें बनाया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फॉर पीपल हु वांट टू रियली लर्न एंड प्रैक्टिस, बिकॉज आप प्रैक्टिस तो कुछ जो भी आप खरीदें किसी कोई आपके रियल पैसा नहीं जा रहा है। दिस इज दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें प्रैक्टिस करके जब आप समझेंगे यू आर रेडी टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट, वहां फिर आप एक्चुअल मार्केट में शुरू कर सकते हैं काम। एक और एक चीज है स्टॉक स्क्रीनर। किसी भी स्टॉक को देखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉक स्क्रीनर, ये जो मार्केट है, मार्केट वाला टैब, इसमें जाए स्टॉक स्क्रीनर पे, और आप वहां से सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे 35-36 सेक्टर्स हैं। सीमेंट सेक्टर में आपने आप इंडेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा सीमेंट जैसे ही आपने ऊपर सेलेक्ट किया, नीचे सारी आपको सीमेंट की कंपनीज नजर आ गई, और उनके क्या प्राइस है, क्या चेंज है, 1 ईयर चेंज क्या है, उनकी अर्निंग क्या रेशियोज है, उनका डिविडेंड यील्ड क्या है वो नजर आ गया, फ्री फ्लोट क्या है। इसमें से आपने किसी एक को भी सिलेक्ट कर दिया, लेट्स से DGKC, डेरी खान सीमेंट आपने सिलेक्ट किया, तो आपको ये ग्राफ नजर आएगा। ये इसकी 1 डे की मूवमेंट पूरी है। अगर आप 5 इयर्स के ऊपर चले जाएं, आपको 5 इयर्स की इस पर्टिकुलर शेयर की समरी नजर आ जाएगी। किसी भी पॉइंट पे आप जाके देख सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस चल रही थी पहले, लोएस्ट पॉइंट क्या था, और आज क्या प्राइस है। When you take a 5-year view, it will help you. You will be able to decide in a better position. You will be in a better position to decide कि क्या ये entry point सही है, क्या मुझे इस वक्त एंटर करना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए, इसका पीक क्या जा सकता है। रेगुलर मार्केट, ये रेगुलर मार्केट है, लोएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, और वॉल्यूम क्या है। सो यू नो दीज आर फ्यू थिंग्स। बाकी ऑब्वियसली द कंपनी प्रोफाइल इज देयर, कंपनी के बारे में आपको सारे फाइनेंशियल नजर आ जाएंगे, इनकी बोर्ड मीटिंग्स कब है, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आए थे, इन्होंने कब दिया डिविडेंड, कब नहीं दिया, और फाइनेंशियल्स में भी यहाँ आपको सारी चीजें नजर आती हैं। पूरी कंपनी का रेशियोज, पे आउट्स, डिविडेंड 10% दिया, ये D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, तो ये देखें 42.5%, 75%। सो ये एक क्विक आपको नजर आ गया कि इस कंपनी ने साल में हर साल में एक दफा डिविडेंड जरूर दिया है। तो किसी भी स्टॉक को देखें, मार्केट स्क्रीनर या स्टॉक स्क्रीनर में जाके मार्केट के अंदर के टैब में जाके जरूर उस स्टॉक को चेकआउट करें बिफोर यू बाय दैट, टू डिटरमिन कि ये आपको डिविडेंड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसकी प्राइस क्या चलती रही है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, 52 वीक्स में क्या रेंज रही है, डे की क्या रेंज है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो वंस यू स्टार्ट लर्निंग दिस, इट विल फिर आप एक मैच्योर स्टेप पे जा सकते हैं। I think that's about all. Now I can over to you, Maham, if you could like see if there are any questions with you and that I can answer. Thank you, Raiga. काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था इस लिहाज से कि जब किसी को अगर बैकग्राउंड नहीं पता, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता, डिफरेंट एवेन्यूज नहीं पता, तो आई एम श्योर ये उनको काफी उनके लिए फायदेमंद होगा।
काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले जो एक बेसिक सा क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस का क्या रोल होता है इन्वेस्टमेंट करने में, स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स खरीदने में, ब्रोकरेज हाउस क्यों जरूरी है, और सीडीसी का क्या रोल होता है। सीडीसी का अकाउंट खोलने में कुछ लोगों ने ये लिखा है यहाँ पे जैसे उनको टाइम लग रहा है, तो इस प्रोसेस को कैसे छोटा बनाया जा सकता है और इनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है। ब्रोकरेज हाउस इज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। मार्केट के अंदर आके काम करने के लिए आपको ब्रोकरेज हाउस के थ्रू अकाउंट खोलना होता है। तो सारे अकाउंट्स ब्रोकरेज हाउस के जरिए खुलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट ब्रोकर खुलवाता है। आप चाहें तो आप ट्रेडर के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप ब्रोकरेज हाउस से ट्रेडिंग ऐप लेके उसके थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वो ऐप भी आपको ब्रोकरेज हाउस प्रोवाइड करता है। सो इट्स लाइक यू गो टू एनी मार्केट लाइक द सदर मार्केट या जोड़िया बाजार, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ शॉपकीपर्स। The shopkeepers may have the same products, मतलब वो टपाल दानेदार की चाय आपको चारों दुकानों में मिलेगी, बट आप डायरेक्ट टपाल दानेदार की फैक्ट्री में जाके नहीं खरीद सकते। सो दिस इज लाइक द स्टॉक मार्केट इज द मार्केट, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको शॉपकीपर्स के पास आना है। शॉपकीपर्स आर द ब्रोकर्स जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब आपका दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट है सीडीसी। सीडीसी इज बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपका जिस तरह आपका बैंक्स में लॉकर्स होते हैं फॉर योर ज्वेलरी, दिस इज लाइक योर लॉकर फॉर योर शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं, शेयर्स लॉकर में प्लेस होते हैं, सीडीसी लॉकर है। सीडीसी में दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक ब्रोकरेज हाउस का अकाउंट जिसके अंदर आपका सब अकाउंट होता है, वो वाला सीडीसी सब अकाउंट जॉइंट अकाउंट होता है ब्रोकर के साथ, ताकि ब्रोकर जब आप खरीदें तो ब्रोकर मार्केट से उठा के आपके अकाउंट में डाले, और जब आप बेचें तो ब्रोकर मार्केट से आपके अकाउंट से उठा के मार्केट में वो सेलर को ट्रांसफर करे। सो ये जॉइंट अकाउंट होता है। इस वाले अकाउंट में ब्रोकर जाके डाल भी सकता है और निकाल भी सकता है आपकी ऑब्वियसली परमिशन के साथ। दूसरा अकाउंट होता है जो आईएएस अकाउंट होता है सीडीसी का, वो आपका पर्सनल लॉकर ऑफ शेयर्स है, यानी वो जॉइंट अकाउंट, वो जॉइंट लॉकर नहीं है ब्रोकर के साथ। तो वो आईएएस अकाउंट खोले तो वंस यू डन योर ट्रांजैक्शंस और आपने बाय एंड सेल ज्यादा नहीं करना है, यू वांट टू होल्ड योर शेयर्स, देन यू कैन मूव योर शेयर्स इनटू योर पर्सनल लॉकर ऑफ शेयर्स, दैट इज योर आईएएस अकाउंट विद इन सीडीसी। टाइम लगता है टाइम्स, बट यू कैन फॉलो अप विद देयर। इनका 0800 नंबर बड़ा एक्टिव है, ये आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस प्रोवाइड कर लेते हैं सीडीसी के एंड पे। थैंक यू सो मच।